Good evening, kids. Today we had JEE Mains 2025, the 22nd January, the morning shift. The paper is moderately easy. Many are saying it is difficult, but it's moderately easy. And the same 2003 or 2024 model. Little bit more some formulas and you have to do calculations. But the rest of everything is same. यहाँ पे जो भी आप कल अगला like 23, 24, 25, 28, 29 शिफ्ट लिख रहे हैं, डरने का कोई बात नहीं है. तो द पेपर लेवल वही 2023, 24 का लेवल ही है. सो द सेम स्ट्रेटेजी, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एंड द फॉर्मूलाज. अगर ये दोनों आपके पास रहे तो द कौन सा भी शिफ्ट रहने दो, यू कैन मैनेज कंफर्टेबली. तो ये जो मॉर्निंग शिफ्ट हुआ आज का 2025 जेई मीन्स 22 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट, इसका हम पेपर डिस्कशन करेंगे. तो विल गेट ए बेसिक आइडिया. सो कल जो भी एग्जाम लिख रहे हैं, सो आई सजेस्ट यू लाइक आप फॉर्मूलास याद कर लो, सो डेफिनेटली हेल्प यू. और जो भी लास्ट शिफ्ट है 28, 29, उन सभी बच्चों से विनती है कि आप फॉर्मूलास रिवाइज करो एंड डोंट बिलीव इन एनी रूमर्स. जो अब तक दो साल में तुम जो लाइक मेहनत कर रहे हो, that only will help you a lot in exams. So don't waste time in watching unnecessary rumors here and there. Focus more on concept clarity and the formula memorization. तो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे. Okay बच्चों, like we are going to discuss the JEE Mains to 2025. 27 जनवरी आज का जो पेपर और 22 जनवरी का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर डिस्कस करेंगे. एंड बहुत कंप्लीट क्वेश्चंस, करीब करीब मेरे पास 23 क्वेश्चंस है. और 23 क्वेश्चंस का सारे सॉल्यूशंस हम आई एक्सप्लेन यू वेरी क्लियरली. ऑल दिस आर मेमोरी बेस्ड. ओके फाइन. तो थैंक्स फॉर योर ग्रेट सपोर्ट. So I will start with the paper discussion. This is the based on the surface tension. There are two bubbles are there. एक बबल हुआ, इसका रेडियस, और एक बड़ा वाला है. Okay, I'll draw like this. ये जो छोटा बबल है will come like this. ये तो आई थिंक सभी को ये फॉर्मूला याद रहेगा. This will be shifted more into the larger bubble, no? यहाँ पे हम ये कर देंगे. So there's a very famous problem in surface tension. इसका रेडियस कितना है? R2 5 सेंटीमीटर. इसका रेडियस कितना है? R1. ये जो बाउंड्री है, इसका रेडियस कितना होगा? This will be कैपिटल R लिख देंगे. ये जो दिस इज द बाउंड्री है. इसका बाउंड्री का रेडियस ऑफ कर्वेचर. तो यहाँ पे हम प्रेशर कैलकुलेट करेंगे. प्रेशर इनसाइड द स्मॉलर बबल P1, प्रेशर P2. ये जो है, सो दे आर इन एयर एटमॉस्फेयर. इसका प्रेशर आउटसाइड P0. So what is the excess pressure or what is the pressure in the bubble? P1 equal to P0 plus 4T by R1. P2 equal to P0 plus 4T by R2. Then ये वाला हुआ कॉन्केव सरफेस एंड इधर का सरफेस हुआ कॉन्वेक्स. और व्हाट इज द लाइक एक्सेस प्रेशर का कॉन्सेप्ट? इट विल टेल यू दैट pressure on concave side will be more than on convex side. So P1 equal to P2 will be 4T by R. P1 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. P0 4T R1, P0 4T R2 plus 4T R.
So 1 by R1 minus 1 by R2 equal to 1 by R. R का वैल्यू R1 R2 by R2 minus R1. सब्स्टिट्यूट करने पर R1 का वैल्यू 3, R2 का वैल्यू 5, 5 minus 3, 15 by 2, 7.5 centimeter. Okay, fine. So this मेरे पास options नहीं, शायद maybe it's based on option 7.5 centimeter, B 6 centimeter, C it will be around 2 centimeter, option D 15 centimeter, option A ले लेंगे. This will be our answer 15 centimeter. So like exam में अगर आपको surface tension याद रहे तो directly I think आपका teacher notes निकालो, this formula will be there. तो आप अपना टीचर नोट्स रिवाइज करेंगे, रियली वेरी बेनिफिशियल. जो भी कल एग्जाम लिख रहे हो, टेक हेल्प ऑफ टीचर नोट्स, वेरी वेरी यूजफुल ना. आई थिंक सभी इंस्टीट्यूशन में टीचर सफिशिएंशन का फॉर्मूला पढ़ा है, कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर चुके होंगे. दिस इज अ वेरी सिंपल टॉपिक एंड हर एक इंस्टीट्यूशन में ये सब पढ़ाते हैं. एंड एनीबडी जस्ट नो दिस फॉर्मूला यू कैन मैनेज. एग्जाम में आपको इतना सब सोचने की जरूरत नहीं है. डायरेक्टली द प्रेशर ऑन द प्रेशर जो स्मॉलर बबल में वो ज्यादा रहता है बिगर बबल से, और ये कॉन्केव साइड हो या कॉन्वेक्स साइड हो. सो प्रेशर ऑन कॉन्केव साइड बी मोर देन ऑन कॉन्वेक्स साइड बाय 40 by r. R will become radius of curvature of this common boundary, common surface, radius of curvature. अगला क्वेश्चन ले लेंगे. This will be a closed organ pipe and an open organ pipe are in resonance with the same tuning fork. The closed organ presents ninth harmonic and the open organ presents fourth harmonic. If the length of closed, then the length of the open organ pipe. यहाँ पे organ pipe, closed organ pipe. यहाँ पे हम एक tuning fork लगा देंगे. Ninth harmonic का closed organ pipe. और एक लंबा खींचेंगे. This is a tuning fork. And the open organ pipe resonance in the fourth organ pipe. Same tuning fork. ये वाला हुआ ओपन ऑर्गन पाइप. इसका कितना हार्मोनिक नंबर है? फोर्थ हार्मोनिक. फोर्थ हार्मोनिक मीन्स यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट वेव डाल देंगे, डिस्प्लेसमेंट स्टैंडिंग वेव दिखा देंगे. फोर्थ हार्मोनिक मीन्स यहाँ पे आपको कितना लूप्स मिलेगा? 4 लूप, 2 हाफ लूप्स, 1 दिस वन. नो. नाइन्थ हार्मोनिक. What is the general formula? Closed end organ pipe का नाइन्थ हार्मोनिक है. सो F1 फॉर्मूला हुआ 2n minus 1 b by 4n1. नाइन्थ हार्मोनिक, क्लोज्ड एंड ऑर्गन पाइप का नाइन्थ हार्मोनिक. नाइन्थ हार्मोनिक मीन्स इसमें इवन हार्मोनिक्स एब्सेंट रहते हैं. तो हार्मोनिक्स 1 3 5 7 9, ये हुआ नाइन्थ. इसको हम फिफ्थ नहीं बोलते, नाइन्थ हार्मोनिक बोलते हैं. इसको फर्स्ट फंडामेंटल, फर्स्ट ओवरटोन, सेकेंड ओवरटोन, थर्ड और फोर्थ ओवरटोन. नाइन्थ हार्मोनिक और फोर्थ ओवरटोन बोथ आर सेम. तो यहाँ पे हम फोर्थ ओवरटोन से इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. 2 into 4 minus even ninth harmonic means it will become 5 b by 4 L1. तो इसका वैल्यू हुआ 9 b by 4 L1. ये जो ट्यूनिंग फोक है सेम है, F एंड F. इसका लेंथ कितना है? L1. तो कितने लूप्स यहाँ पे रहेंगे? 1 1 2 3 4 5, 4 and half. Half loop, half loop, half loop. Yeah. फाइंड ऑफ लूप और एक लूप यहाँ पे डाल देता हूँ. 2 3 4.
फाइन, इसका लेंथ कितना है? इसका लेंथ हुआ L2। तो व्हाट इज F इज इक्वल टू, इसका हार्मोनिक नंबर कितना है? 4NV/2L2। इसका हार्मोनिक नंबर कितना हो? 4V/2L2। सेम ट्यूनिंग फोक, दोनों का ट्यूनिंग फोक सेम है, तो हम इक्वेट करेंगे इसको। लाइक दिस विल बी 9V/4L1 इक्वल टू 4V/2L2। द लेंथ ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का कितना है? 10 है। सो 9/4 इंटू 10, 2/L2। L2 का वैल्यू विल बी 80/9 सेंटीमीटर। सो आपको ये याद रहना चाहिए, closed end organ pipe, only odd harmonics will be present, whereas for open end organ pipe, both even as well as odd will be present. Waves and sound, like इस particular unit से एक ही क्वेश्चन पूछ रहा है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे कंप्लीट वेव्स एंड साउंड हमें एक ही क्वेश्चन आ रहा है। ऑलरेडी अब क्लोज्ड एंड ऑर्गन पाइप के बारे में पूछा है, बाकी बचे सो क्या है? साउंड और थोड़ा लाइक बीट्स, the next interference, then standing waves on a wire, propagation of a wave on a string. तो कल जो भी लिख रहे और बाकी जो भी लिख रहे, ये बचे सो जो भी है, इफ टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, ट्राई टू रिवाइज देम। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेंगे। फाइंड द रेशियो ऑफ हाइट्स इन द फर्स्ट एंड लास्ट सेकंड ऑफ अपवर्ड जर्नी। ये जो क्वेश्चन है बच्चों, लाइक फाइंड द रेशियो ऑफ हाइट्स इन द फर्स्ट एंड लास्ट सेकंड ऑफ जर्नी। देयर इज अ प्रोजेक्टाइल is projected with a speed u 60 meter at an angle 30 degree with horizontal. Is asking to calculate the find the ratio in the first and last second. So what do you mean by first and last second? So यहाँ पे हम प्रोजेक्टाइल का डायग्राम डाल देंगे। फाइंड द रेशियो, यहाँ से हम प्रोजेक्ट करते हैं एट एंगल 30 डिग्रीज। व्हाट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट? टाइम ऑफ फ्लाइट हुआ 2 sin 30 degree by g. This is the theta, this is the speed of projection, so 2 into 60 into 1 by 2, 10, 6 seconds. जब at 1 second और at 5 seconds, इसका जो I पूछ रहे हैं H1 and H2. So then H1 is equal to U sin, डायरेक्टली ये जो फॉर्मूला हम यूज करें, U sin theta t minus GT square, 60 1 by 2 1, 10 by 2 1 square, so 30, so ये हुआ 25 मीटर। H2 का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, H2 इक्वल टू U sin theta t minus GT square। U का वैल्यू 60 sin 1 by 2, टाइम कितना है? 5 seconds। ये जो हुआ T2 T1, 5 10 by 2 5 square। इसका भी कैलकुलेट करो, 25 मीटर। So what is the ratio of H1 by H2? H1 by H2, this will be how much? 25, so like a 1 meter. Fine. Huh? Very simple problem. Thoda like a is asking about the ratio of heights attained. So question thoda find the ratio of heights attained by projectile in first and last second of upward journey. ये upward journey है ना। अपवर्ड जर्नी का तो मैक्सिमम यहाँ पे 3 सेकेंड्स हुआ, 0 और एक लास्ट सेकेंड ऑफ अपवर्ड जर्नी, ये वाला तो 2 कर लेंगे इसको। इसका T0 समथिंग रख देंगे T0,
टी नॉट का कितना हुआ, 2 स्क्वायर, तो इसका वैल्यू कितना हुआ, 16 माइनस 20, ये हुआ 40, तो 25/40, दिस विल बी 5/8 मीटर, समथिंग इस तरह का है. सो लाइक ए अपवर्ड जर्नी, दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने सोचा था ये वाला, इट्स अपवर्ड जर्नी लाइक इट. तो एट टी को टू 0, यहाँ से हम प्रोजेक्टाइल को देख रहे हैं, एक स्टोन, वी आर थ्रोइंग द स्टोन. 1 सेकेंड में यहाँ तक ए हाइट अटेंड हो जाता है. नेक्स्ट अनदर, after 2 seconds it will be there, 3 seconds it will come, so this will become last 1 second of upward journey. ए वाला निकाल देंगे, सम एच कर देंगे, लास्ट सेकेंड ऑफ अपवर्ड जर्नी. ए वाला हुआ लास्ट सेकेंड ऑफ अपवर्ड जर्नी, यहाँ से यहाँ तक 1 सेकेंड, यहाँ से यहाँ तक 1 सेकेंड, दिस विल बी लास्ट सेकेंड ऑफ अपवर्ड जर्नी. थोड़ा बहुत दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे मैं नेग्लेक्ट किया तो इट मे हैपन, लिटिल बिट वी हैव टू बी अलर्ट. नो, ये वाला क्वेश्चन, find the heat required in the process to convert this 10 power of minus 3 kg ice at minus 10 to into steam at 110 degrees Celsius. इसका what is the 0 point, what is the mass of ice, 10 to power of minus 3 kg, इसको हम ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे. 1000 ग्राम्स कितना हुआ, ये 1 ग्राम हुआ. 1 ग्राम ऑफ आइस, इसको हम फ्रॉम माइनस 10 टू, इसको हम 110 डिग्री सेल्सियस एट स्टीम, सो मच ऑफ हीट रिक्वायर्ड. यहाँ पे आपको डायरेक्टली फॉर्मूला Q1 फर्स्ट, व्हाट वाज द इनिशियल टेम्परेचर आइस का, -10 है, तो इसको हम -10 से जीरो करने के लिए कितना हीट सप्लाई करना चाहिए, मास ऑफ आइस, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस, 0 माइनस ऑफ -10, मास ऑफ आइस 1, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस 1/2 और 0.5, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस. डेटा विल बी देयर इन एग्जाम, डरने का कुछ जरूरत नहीं. तो देन दिस विल बी 10, तो ये हुआ 5 कैलोरीज. हम जो वैल्यू लगा रहे हैं, दिस विल बी इन कैलोरीज पर ग्राम. देन बाद में Q2 कैलकुलेट करेंगे. Q2 इक्वल टू मास ऑफ आइस इनटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. मास ऑफ आइस कितना 1, लेटेंट ऑफ ई विल बी 80, सो 80 कैलोरीज. ये जो 1 ग्राम ऑफ आइस, इसको 0 डिग्रीज, 0 आइस एट 0 डिग्रीज, इसको टू कन्वर्ट इनटू वाटर एट 0 डिग्रीज, तो 80 कैलोरीज चाहिए. बाद में Q3 इक्वल टू will become water, specific heat of water, इसका टेम्परेचर फ्रॉम 100 टू 0, इसको इंक्रीज करने के लिए 1, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1 कैलोरी पर ग्राम इंटू 100, सो ये हुआ 100 कैलोरीज. बाद में Q4 टू कन्वर्ट इनटू स्टीम, मास ऑफ water into latent heat of vaporization, 1 into latent heat of vaporization is 540 calorie per gram, 540 calories. ओके फाइन. इसका बाद में स्टीम के लिए Q5 इक्वल टू मास ऑफ स्टीम, स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम, टेम्परेचर फ्रॉम 100, 110 टू 100, तो इसका वैल्यू ऑफ 1, स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम करीब करीब 0.5 है, 0.48, we can take approximate 0.5 into 10, so इसका हुआ 5 calories. इसको भी ऐड कर, like we'll add up all this, 5, 85, 185, 185, 190, 190 और 540, 0, 3, 1, 1, 6, 7, 730 calories. This will be your answer. ये तो कॉन्सेप्ट हुआ कैलोरीमेट्री, बेस्ड ऑन कैलोरीमेट्री. ओके, अगला क्वेश्चन ले लेंगे. ये थोड़ा एडजस्ट कर लो मैं.
A dielectric slab is inserted. A dielectric slab is inserted. Find the delta U. Change in charge on the capacitor. Change in energy stored in capacitor. Delta Q. Change in find delta U, delta Q. यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन यहाँ पे delta U by delta Q या रेशियो ऑफ चेंज इन एनर्जी पता नहीं, सो विल वर्क आउट ऑल द थिंग्स. इनिशियली इसका कैपेसिटेंस के है. जब हम डायलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस करेंगे, यहाँ पे हम एक डायलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है इसका, के वैल्यू. देन व्हाट इज द चेंज इन एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर. तो पहले इसका चार्ज कितना होगा, क्यू नॉट माइनस क्यू नॉट. क्यू नॉट का वैल्यू कितना, C into EMF of the battery, let it be E. C into E, so this will be 100 C. Then जब हम डायरेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस करते हैं, इसका कैपेसिटेंस चेंज हो जाता है. सो कितना, लाइक अर्लियर C नॉट ले लेंगे, तो कैपेसिटेंस कितना होगा, के सी नॉट, और दिस विल बिकम 2 C नॉट. सो यहाँ पे चार्ज कितना हुआ, नो, C into E. सो कैपेसिटेंस कितना, 2 C नॉट into 100. तो ये वाला हुआ 200 C नॉट. देन रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर्ड, यहाँ पे एनर्जी स्टोर्ड U1 ले लेंगे, ये U2, U1 बाय U2. फाइंड डेल्टा U. डेल्टा U कैलकुलेट करेंगे. सो डेल्टा U शुड बी इक्वल टू U2 माइनस U1. U2 का वैल्यू कितना है, एनर्जी का वैल्यू Q स्क्वायर बाय 2, कैपेसिटेंस कितना 2C, माइनस ये वो Q नॉट स्क्वायर बाय 2C नॉट. तो Q स्क्वायर वैल्यू विल बी 200 C नॉट होल स्क्वायर बाय 2. C का वैल्यू कितना है, 2C नॉट, माइनस Q नॉट स्क्वायर बाय 2C नॉट. ये 400 बाय 400 माइनस 1 बाय 2 Q नॉट स्क्वायर बाय C नॉट. इसका चेंज इन चार्ज कैलकुलेट करेंगे. चेंज इन चार्ज कितना हुआ, Q माइनस Q नॉट. Q का वैल्यू कितना, 200 C नॉट, ये 100 C नॉट, ये हुआ टोटल 100 C नॉट. अब जो भी पूछ रहे हैं, आई थिंक मे बी इज आस्किंग अबाउट द डेल्टा U बाय डेल्टा Q. मे बी डेल्टा U बाय, मे बी यहाँ पे इनिशियल फाइनल चार्ज का रेशियो पूछ रहे हैं, और मे बी इट इज U2 बाय U1. U2 का वैल्यू कितना है, Q स्क्वायर बाय 2C नॉट. मे बी इट्स रेशियो है. सो Q स्क्वायर विल बी 200 C नॉट होल स्क्वायर, ये हुआ 2C नॉट. 2 भी कैंसिल हो जाता है. Q नॉट का वैल्यू, Q नॉट will be 100 C naught whole square by 2C naught. ये 2 कैंसिल हो जाता है. तो दिस विल बी कितना आपको, दिस विल बी 100 0 zeros कैंसिल. सो यहाँ पे 4 by 2 मिलेगा रेशियो. अगर इफ इज आस्किंग अबाउट रेशियोस ऑफ इनिशियल फाइनल पोटेंशियल जी, ओके. अगर चार्ज के बारे में पूछ रहा है तो ओके फाइन, वो भी हम कर सकते हैं. Q by Q नॉट, Q का वैल्यू कितना है, 200 C नॉट, 100 C नॉट, वो भी 2 हो जाता है. तो then it should be ratio, ये वाला Q2 by Q नॉट, ये U by U नॉट. और ये भी हो सकता है लाइक दिस, लाइक कैपेसिटर को, बैटरी को डिस्चार्ज करके फिर जब आप डायरेक्ट्रिक स्लैब लगाते हो, then what will happen, there is another scenario, the same question. Let me explain that idea, it will be easy for you. 100 वोल्ट है, इसका कैपेसिटेंस C है, इसका चार्ज कितना है, Q नॉट इक्वल टू 100 C.
इसको हम डिस्कनेक्ट करते हैं, जो भी चार्ज है इट विल नॉट चेंज। देन यहाँ पे हम डायलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस करेंगे। कुछ कुछ यहाँ पे मेरे को सेम क्वेश्चन इस तरह में भी लाइक सेम क्वेश्चन अवेलेबल इन डिफरेंट फॉर्मेट लाइक दिस। देन यहाँ पे जो भी चार्ज है चार्ज विल नॉट चेंज, द चार्ज ऑफ सिस्टम will not change because the charge will be conserved because isolated. तो अब इसका चार्ज तो चेंज नहीं होगा, सो कैपेसिटेंस कितना होगा के सी नॉट। तो जो भी चार्ज है चार्ज विल रिमेन सेम नो, पहले कितना चार्ज था वही सेम चार्ज है। So then if he's asking the ratio of initial to final charge, it will be 1. This charge will not change. इसका कैपेसिटेंस चेंज हो जाता है। अगला क्वेश्चन ले लेंगे। ये तो सिंपल बेस्ड ऑन द डायोड्स। कौन सा फॉरवर्ड बायस है? सो व्हाट डू मीन बाय फॉरवर्ड बायस? इफ P is more positive than N, if P is more positive than N, then it will be forward biased. So हमें पहले ये डायोड ले लेंगे। Which of the following is for which of the following are और is बोल रहा है, इसमें से कितना which is not forward biased ना, तो भी चेक कर लेंगे। If N is more positive than P, then it will be reverse biased. तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। पहले वाला दिस विल बी N, दिस विल बी P टाइप। आप यहाँ पे देख लीजिए, N is more positive than P, so this will be reverse biased. Next, दूसरा वाला again N is more positive than P, so this will also be reverse biased. Then यहाँ पे देखो N का कितना है, 10 है, 10 वोल्ट है, एंड P will be सबका पहले P है, P टाइप N टाइप। नो, N is more positive than P, so therefore what will be this one? This will be again reverse biased. यहाँ पे देख लो P is more positive than N, इसका N का कितना है, ये तो हर्थ हुआ, इसका 0 पोटेंशियल, और P type is connected to +5 volt, so this will be forward biased. This will be your answer. There are small ideas, like जब पहले जब वो लोग क्वेश्चन एनटी वाले रिलीज करते, okay, then some maybe here and there, but these are some at least ideas are there. Really we should उन बच्चों को जो एग्जाम, आज का एग्जाम लिख के हाँ कि हमको इतना लाइक दे आर हेल्पिंग अस, दे आर गिविंग क्वेश्चंस, लाइक बाकी बच्चों को लाइक इसे लॉट ऑफ हेल्प। एटलीस्ट तुमको आइडिया हो जाएगा ना, लाइक व्हाट आर द लेवल दे आर आस्किंग। अगला क्वेश्चन ले लेंगे। Now this is the from a sphere of mass m, radius or cavity of is created. Find the moment of inertia but are passing through the center of sphere and the cavity. So what is the axis? यहाँ पे axis जरूरी है। So what is the axis? Axis तो ये वाला हुआ axis. But this axis is asking to calculate the moment of inertia. Cavity किधर है? ये वाला तो cavity हुआ। हम क्या assume करेंगे? like for a sphere of mass and radius, cavity of radius r/2 is created. Find the moment of inertia. There's a question. यहाँ पे हम पहले sphere without cavity, तो उसका लेके मास कैलकुलेट करेंगे। Cavity of radius r/2 is created, तो इसका रेडियस, इसका मास कितना होगा? इन स्पीयर
ऑफ मास एंड रेडियस आर, बाकी बचे सो कितना m/8 हुआ। सो डेंसिटी, पहले डेंसिटी ले लेंगे। सो डेंसिटी इक्वल टू मास बाय 4/3 पाई आर क्यूब बाय 4/3, this is density, so mass m will be 4/3 pi r by 2 whole cube. Density will be, so this will be now 4/3 pi r cube. This will be 1 minus 1 by 8, 8m by 7, 4/3 pi r cube. Okay, this was the density of the sphere. Then what is the mass of this one? M1 will be rho into 4/3 pi r cube. इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया m1 तो ए हुआ m, और जो कैविटी है इसका रेडियस कितना हुआ r/2, मास m2, इसका मास m2 कैलकुलेट करेंगे। ये तो नेगेटिव डेंसिटी हुआ, सो द मास m2 इज इक्वल टू माइनस रो 4/3 पाई r/2 होल क्यूब। तो इसका मास हुआ माइनस m/8। नाउ टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम, ये एक्सिस पे रोटेट हो रहा है, सो दिस शुड बी 2/5 m1 r square plus 2/5 m2 r/2 whole square। 2/5 r square तो बार आ चुका है, m1 plus m2/4, 2/5 r square, m1 का वैल्यू इज m, नो m2 का वैल्यू कितना है m/8 इंटू 4। सॉल्व करने पर हमें 31/8 m r square। कैविटी ये वाला हुआ कैविटी। So like this cavity, center of mass में बहुत सारे जगह में पूछ सकते हैं, have to be careful। अगला क्वेश्चन ले लेंगे। Find out the, you have to find out the temperature theta shown in the diagram। यहाँ पे हमें स्लैब्स इस तरह के है, ए वाला स्लैब K1, ए वाला स्लैब इसका थर्मल कंडक्टिविटी K2 है, और ए वाला इसका थर्मल कंडक्टिविटी K3। तो इस तरह का डायग्राम हम कंप्लीट कर सकते हैं। सो नाउ इसका टेम्परेचर फाइंड आउट करना है। वी हैव टू फाइंड आउट द टेम्परेचर ऑफ दिस, टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन। यहाँ पे हम विल सेंड द हीट, इट विल ब्रांच आउट, जैसे बेस्ड ऑन द थर्मल रेजिस्टेंस। पहले हम एक सर्किट डाल देंगे, दिस R1 R2, ये वाला हुआ R3। यहाँ पे टेम्परेचर कितना है 100 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस। इसका टेम्परेचर फाइंड आउट करना है हमें। तो व्हाट इज R1 का वैल्यू हुआ R1 इक्वल टू, इसका लेंथ कितना हुआ L/2, K1 वैल्यू K1 A/2, तो L/K1 वैल्यू विल बी 60A। R2 रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे इसी तरह से। तो R2 का वैल्यू विल बी, इसका भी रेजिस्टेंस L/2 K2 A/2, L/K2 का वैल्यू कितना 128। R3 का वैल्यू विल बी L/2 K3, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, तो दिस विल बी L/K3 का वैल्यू 135 विल बी 270A। R1 R2 ये जो दोनों पैरेलल, इसका इफेक्टिव विल बी R रख देंगे, सम R डैश, और
A R3 zeros, or this will be 100 degree Celsius. Temperature T. So R dash का value कितना नो? R dash will be 1 by R dash equal to 120 A by L, 270 A by L. So R dash का value है L by 298. So 398. Now they are in series. यहाँ पे same heat current flow होता है. So therefore this will become 100. जो यहाँ पे heat current flow हो रहा है वो same heat current HH ले लेंगे. जितना heat current यहाँ पे flow हो रहा है same heat current यहाँ पे flow हो रहा है. So then this will become temperature heat current equal temperature difference by resistance R dash T minus 0 by R3. तो इसका वैल्यू 100, R1 का वैल्यू 398 माइनस टी, टी बाई R3 का वैल्यू L by 278. So this will be 390 100 minus T equal to 270 T. 39,000 is equal to 270 plus 390. ओके, टी का वैल्यू कितना हुआ? 3900 बाय 270 90 160 160 560 660. Three ninety 90 plus 70 will be 160 160 plus 500 660. यहाँ से हम फिर से लगे वी कैन सिंप्लीफाई विथ 3 नो. यहाँ पे 13 and over 22. So 1300 by 22. 1300 by 22. Let me use calculator. तुम यूज नहीं कर सकते हो, मैं यूज कर सकता हूँ. Okay, 1300 by 22. Around 59. This would be your answer. What is the topic? This one, thermal conduction. अरे का टॉपिक का that is also very important. अगला क्वेश्चन ले लेंगे. And the ratio of gravitational force F1 and F2 between sphere and mass particle before cutting and after cutting. So this after cutting यहाँ पे डायग्राम है, before cutting का एक डायग्राम डाल देंगे. तो before cutting यहाँ पे पार्टिकल मिला है हमें. So there's a radius R. ये सब जो है बिना कैविटी का, बिना कैविटी. नाउ what is the force acting on this particle will be called F1. तो F1 यहाँ पे फील्ड कितना होगा? E1. So F1 will be equal to Gm by 2R whole square. Gravitational force पूछ रहे हैं. So it will be Gm square. फील्ड कितना? ओके, एक काम करेंगे, पहले फील्ड कैलकुलेट करेंगे. सो दिस विल बिकम Gm by 4R square. So फोर्स कितना हुआ? M into E1. So Gm square by 4R square. बाद में जब कैविटी आता है तो कितना कैविटी हम यहाँ पे निकाल रहे हैं? R/3 मास यहाँ से निकालना है. So then we'll calculate the mass of cavity. M2 इसका तो रो 4/3 pi R/3 और को रो का वैल्यू कितना है? 4/3 pi R cube. 4/3
3 pi r cube and ये हुआ 9. इसका मास हुआ m/9. Now what is this one? Before, afterwards, we have to approximate like this. This will interact. Only now cavity will calculate the interaction between the particle and the cavity. So distance between the particle and cavity कितना होगा? 2r में r/3 निकाल देंगे. Say 2r/3. In 2r, we'll remove 2r/3. 3 2 just 6 6 4r/3. Separation between the cavity and the particle will be 4r/3. इसका मास कितना है? m2. Now this will interact with the cavity. यहाँ पे हम फील्ड कैलकुलेट करेंगे ड्यू टू कैविटी. सो E2 का वैल्यू कितना होगा? नाउ Gm2 बाय 4r/3 होल स्क्वायर. M2 का वैल्यू कितना है? M2 का वैल्यू विल बी m/9. No, this will be 16r²/9. So this will be Gm/16r². Now we'll subtract this field. The net field will be E1 minus E2. क्यों subtract करना है? Because cavity का field तो like it will be in this direction, opposite direction, because negative mass density. यहाँ पे negative mass density यहाँ पे लगा दो बस. Negative E means it should be away. तो E1 का वैल्यू कितना है? E1 का वैल्यू will be Gm/4r². Gm/16r². तो यहाँ पे Gm/4r² कॉमन कर लेंगे. 1 minus 1/4. 3 Gm/16r². Net field. So what is the force of interaction? M into E. Naya force. The new force of interaction. This should be equal to 3Gm²/16r². ग्रेविटेशनल फोर्स पूछ रहे हैं. इसका हम F2 करें. So F1/F2 is asking about F1/F2. So F1 का वैल्यू कितना है? F1 का वैल्यू will be Gm². Let me simplify कर देता हूँ थोड़ा बहुत. So यहाँ पे F1/F2 पूछ रहे हैं ना. F1 का वैल्यू हुआ Gm²/4r². F2 का वैल्यू 3Gm². (16r²) 4/3. And this will be your answer. So this topic is based on the gravitation. अगला क्वेश्चन ले लेंगे. Write a dimensional formula. ये तो problem based on the units and dimensions. And very easy question. No? तो आप डायरेक्टली मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द वायर, उसका फॉर्मूला अगर आपको याद रहे तो B बार इक्वल टू म्यू नॉट I/2πx. ये तो फॉर्मूला है. नो इसका B/μ0 I 2πx. इसका क्या हुआ? नो इसका डायमेंशन पूछे. डायमेंशंस ऑफ दिस शुड बी इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ दिस टू. 2 तो कांस्टेंट हुआ. द इंटीजर 2 विल बी कांस्टेंट, पाई विल बी कांस्टेंट. इसका कुछ डायमेंशंस नहीं रहते. सो व्हाट इज द डायमेंशंस ऑफ I एंड X? I का हुआ करंट एंड दिस का हुआ
length dimension. So this will be AL minus 1. Very simple. So if you know the magnetic field due to the long wire, it will be easier. अगला क्वेश्चन ले लेंगे. Jockey, this one, there's a spelling mistake है यहाँ पे. JOCKEY. Find the current through the battery. So बहुत सारे बोल रहे हैं कि this is the out of syllabus sir, delete it. It doesn't require potentiometer concept. इस कनेक्टेड एट मिड पॉइंट पूछ रहे हैं. यहाँ पे मिड पॉइंट पे कनेक्ट करे तो मिड पॉइंट कनेक्ट करें तो देन क्या हो जाता है कि लगे दिस इज सेल. इसका वायर का पोटेंशियोमीटर वायर कितना है 1 ओम है. पोटेंशियोमीटर वर्ड नॉट यूज बट दिस सर्क्यूट इज अ पार्ट ऑफ सिलेबस. 0.5 ओम यहाँ पे आ जाता है. बाकी 0.5 ओम देन 2 ओम यहाँ पे ये हुआ 0.5 and this will be 2 ohm. EMF of cell 0.9 volt. 2 ohm and 0.5 ohm. These two effective will be 2 into 1 by 2, 2 plus 1 by 2. इसका 2 by 5. 2 by 5. 2 by 5 का वैल्यू कितना होगा 0.4. 0.4 will be in series with this. अगला सर्क्यूट सिंप्लीफाई होने के बाद कितना आ जाएगा 0.4 ओम और ये वाला हुआ 0.5 ओम. कुल मिला के 9. कितना टोटल रेजिस्टेंस हुआ 9 0.9 ओम. कितना करंट फ्लो हो जाएगा 0.9 by 0.9 1 एम्पियर. not needed, not a potentiometer concept, huh? Just like at the midpoint of the wire उसका रेजिस्टेंस वायर का रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम है. So half ohm will come here. So it's just based on the series parallel. बल्कि जॉकी समथिंग पोटेंशियोमीटर वायर समथिंग कॉन्सेप्ट अगर वर्ड्स यूज किया रहे तो भी still it's a part of syllabus. Potentiometer not part of a syllabus, but still it's part of syllabus. So I'll write this is something like based on the series parallel. Current LCT. अगला क्वेश्चन ले लेंगे. The radius of the ground state radius of hydrogenate is calculate the radius of the first exact state of the helium ion. आपको तो ये फॉर्मूला अगर याद रहे तो एटॉमिक फिजिक्स दिस प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द डायरेक्टली अगर आपको फॉर्मूला याद रहे तो ओके फाइन गुड और एल्स यू कांट डिराइव. So we'll recollect the radius of the nth Bohr orbit in hydrogen atom. The formula will be n square z a naught. What is a naught? A naught is Bohr's orbit. For hydrogen atom का value z equal to 1 for hydrogen. Helium का कितना है? Helium का z equal to 2. Okay, fine. तो यहाँ पे लगा देंगे हम Rn. Radius of hydrogen atom, the ground state n will be 1. Hydrogen atom का कितना है? N equal to 1. Radius of first excited state, इसका हुआ helium n equal to 2. यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे हम a naught by a naught by a पूछे. Calculate the radius of first excited state of helium. Ground state radius of hydrogen atom is a naught, n equal to 1. Yeah,
पहले हाइड्रोजन का फाइंड आउट करेंगे। हाइड्रोजन का n इक्वल टू 1 1 स्क्वायर 1 ए नॉट, ए हो गया n ए नॉट। हीलियम का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। हीलियम का फर्स्ट एक्साइटेशन मींस n इक्वल टू 2, then charge of nucleus of helium will be 2, ए नॉट। सो यहाँ पे ए नॉट हम आर एच करेंगे। सो आर एच ई विल बी 2 times of that of आर एच और 2 ए नॉट। It was asked like this in exam. This is a formula. Radius of n board orbit n square is n square a naught by z. एग्जाम में आप डिराइव नहीं कर सकते, तो वेरी लेंदी है, बल्कि आपको ये तो याद रखना पड़ता है। ये तो थोड़ा मैटर वेव्स के बारे में क्वेश्चन है। Electron in the ground state of hydrogen atom has an orbit of this much, while that of electron in the third excitation, the ratio of de Broglie wavelength. The ratio of de Broglie wavelength of electron in the ground state to that in the excited state. This is based on the de Broglie matter waves. For the revolving electron, the formula will be 2 pi r by n. Or this is one basic concept, no? N lambda equal to 2 pi r. So based on this, we'll take the formula like this. The ratio of de Broglie wavelength of electron in the ground state to that in the excited state. Means a third. Third means n equal to 4. Huh? So lambda 1 by lambda 4 equal to 2 pi r1 by n1, 2 pi r2 power of 4 by n4. This will be n2, n4 by n1, r1 by r4. Third excitation means it will be 4. R1 का वैल्यू कितना है 5.3 into 10 to power of minus 11, इसका 8.48 into 10 to power of minus 10. इसको यहाँ पे रेशियो या तो सॉल्व इट। This is a formula. So I think n lambda equal to 2 pi r. De Broglie matter waves of revolving electron. So what is the formula? L is lambda equal to h by mv. यहाँ से हम डिराइव करते हैं इसको। अगला क्वेश्चन ले लेंगे। The energy radiated by sphere, एक स्फीयर है, इसका रेडियस कितना है a, of surface temperature T1 R1, इस E बोल रहे हैं, यहाँ पे एक स्फीयर हुआ, देन और एक बड़ा स्फीयर, इसका एनर्जी रेडिएशन कितना है, and the surface temperature is 400 K. Then the energy radiated by this. In terms of E, we have to express इसका R2, इसका surface temperature 400, इसका surface temperature 800 K. रेडियस कितना है 0.2 मीटर, रेडियस इसका कितना है 0.8, सरफेस टेम्परेचर कितना हुआ 400 केल्विन। देन व्हाट इज द स्टीफेंस लॉ? स्टीफेंस लॉ पावर रेडिएटेड should be equal to sigma E sigma surface area 4 pi r1 square t1 to the power of 4, p2 E sigma 4 pi r2 square t2 to the power of 4. इसका जो पावर है दिस टोटल एनर्जी रेडिएटेड विल राइट इट, इसका ई डैश पूछ रहे। Now E dash by E should be equal to R2 by R1 square T2 by T1 to the power of 4. In terms of E यहाँ पे एक्सप्रेस करना है, so 0.8 by 0.2 whole square, temperature 400 by 800 to the power of 4. यहाँ पे 4 स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, एंड यहाँ पे 1 to the power of 4, 1 by 2 to the power of 4.
So A was 16 by 4. This will become 4D. The simple formula based. Stephen's law. अगर आपको फॉर्मूला याद रहे तो then fine, good, you can do better in exam. Otherwise कुछ नहीं कर सकते आप. Revising formulas, very important. So this based on the radiation, thermal radiation. Stephen's law. अगला क्वेश्चन ले लेंगे. The fringe width. यहाँ पे YDC. Now in YDC, the fringe width is given by lambda capital D by mu D. Mu is what? Refractive index. The fringe width might decreases if the setup is put in a denser medium. Definitely. Mu if for any medium will be greater than 1, so the fringe width will decrease. So एक काम करेंगे. Fringe width. Now when you immerse in medium, it will become mu D. So W dash will be W by mu. Then what is the speed of light? Speed of light is given by V equal to C by mu. In free space कितना होगा speed? C. और medium में कितना होगा? Will be less than C. V dash less than V. The fringe width in YDAC decreases, setup is put in a denser medium. Correct statement. Velocity of light decreases in the denser medium, but frequency remains constant. This is correct. And this is a correct explanation. Okay, fine. Both assertion correct, reason correct. And this is a correct explanation. Reason is correct expression of assertion. Just simple theoretical concept. अगला क्वेश्चन ले लेंगे. In a Vernier caliper, one Vernier scale division is smaller than one main scale division. I think this is what happens. No? 10 VSD will become 9 MSD. This is what happens. The Vernier constant is given by one main scale division multiplied. No, what is the Vernier constant? Vernier constant or the least count. This will write it as 1 MSD minus 1 VSD. So this is wrong. This one is correct. Assertion is correct. Reason is wrong. This is a basic idea. One Vernier scale is smaller than one main scale. Usually the most of the Vernier calipers what will be having, we will design in this manner only. Take the next question. A particle is projected with a velocity V0 from point A in vertical so that the rope becomes slack at point B. Then the ratio of kinetic energy at point B and C. So what is the minimum velocity you have to project at lowest point? At lowest point you have to project which is equal to U. कितना? V0. काम करेंगे इसका V0 ले लेंगे. Let R be the slack. Let L be the length of the string. V0 should be equal to root of IGL. Then the string will become, tension will become 0 at that point and VD will become equal to root GL. Okay, so concept I think पता है सभी लोगों को. Then is asking the ratio of kinetic energy at point B and C. यहाँ पे कितना kinetic energy at B and C. इसके लिए सर्कुलर वर्क पर एनर्जी चैप्टर अगर आपको कॉन्सेप्ट है तो देयर बी मोर देन इनफ. स्पीड अगर स्पीड आपको पता रहे तो देन यू कैन कैलकुलेट दिस वन. सो विल अप्लाई द काइनेटिक एनर्जी mva square equal to mgl minus l cos 60 degree plus mvb square by 2. So va square equal to 2g gl vb square.
तो वी ए स्क्वायर कितना, इसका वैल्यू विल बी 5 GL वी बी स्क्वायर। तो नो वी बी का वैल्यू कितना हुआ, √4 GL। वी बी स्क्वायर वैल्यू ही लगा देंगे। So VB square value will be 4 GL। कंटिजेंट सी कैलकुलेट करेंगे, MVA² by 2 इक्वल टू mg L प्लस L cos 60 डिग्री MVC² by 2। तो VA² 2GL L प्लस L/2 VC²। डायरेक्टली हम सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पे। VA² का वैल्यू पता है हमें, ये तो 5 GL है, 2 GL ये हुआ 3L/2 प्लस VC²। यहाँ पे 2, तो 2GL VC² का वैल्यू कितना है, 2GL है। नाउ द रेशियो ऑफ कंटिजेंट बी एंड सी, कंटिजेंट बी देन कंटिजेंट सी। कंटिजेंट बी कितना, MVB²/2, MVC²/2। सो VB², सो ये हुआ 4GL/2GL will be 2। Your answer will be 2। So what is the concept here? थोड़ा vertical circular motion and work for energy, दोनों मिला के ये प्रॉब्लम पूछ रहे हैं यहाँ पे। जस्ट कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। सर ये इक्वेशन आप एक कहां से डाल दें, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी फ्रॉम ए टू बी देन ए टू सी। अगला क्वेश्चन लेंगे, ये वाला रे ऑप्टिक्स में पूछ रहे हैं। एक कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिवनेस 3/2। यहाँ पे थोड़ा लेंस दिखा देंगे। प्लेस्ड इन वाटर, बाकी सब जो है एवरीथिंग इज वाटर। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ इनर एंड आउटर सरफेस, फाइंड द पावर ऑफ कॉम्बिनेशन। इसका जो पावर पूछ रहे थे, वी हैव टू कैलकुलेट द पावर ऑफ कॉम्बिनेशन। आई थिंक थोड़ा डेटा मैं चेक कर लेता हूँ। बच्चों वो थोड़ा लेंस वाला वो एक्सीडेंटली क्वेश्चन यहाँ पे आ गए। सो दिस इज द क्वेश्चन, मैं रीड कर लेता हूँ। गिवन ए थिन कॉन्वेक्स लेंस ऑफ ग्लास विथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n and each surface of radii r, one side is polished for complete reflection, at what distance from the lens and object to be placed on optic axis so that image formed on the object itself। यहाँ पे हमें लेंस है, थिन लेंस ऑप्टिक एक्सिस, यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट रख रहे, वी हैव सिल्वर्ड इट, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n और दोनों का रेडिया r। So what is this silver lens? So ये तो concept हुआ silver lens। Then this is equal to lens plus mirror। इसका फोकल लेंथ FLM, ए हुआ FM, इसका रेडिया है R and N। Again this is equivalent to one mirror itself। इसका इक्वलेंट फोकल लेंथ वी हैव टू कैलकुलेट, इसका कितना फोकल लेंथ है। तो वी हैव केप्ट इट at a distance 2f। अगर आप if you keep it at center of curvature then it will be same, so that image is formed on the object itself। So he is asking to get the value of f, that one at what distance, इससे distance के बारे में पूछ रहे हैं। this one, this is x बोलो, so what is x, x should be equal to 2f। how to calculate the f
1/f इक्वल टू 1/fn माइनस 2/fn। fm का वैल्यू कितना है r/2। पहले इंडिविजुअल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ए तो माइनस r/2 एंड ए तो what type of lens? This lens is a equiconvex, so then directly go for 1/f equal to 1/n minus 1 1/r minus 1/r। इसका वैल्यू हुआ f इक्वल टू r/2 म्यू 2n 2n minus 1। एग्रीड। सो ये तो लेंस लेंस का फॉर्मूला हो। यहाँ पे सभी लगा देंगे 1/f। एफ एम का वैल्यू कितना है -r/2। सो ये हुआ -r/2 माइनस ऑफ दिस विल बी, इसका वैल्यू हुआ 2n minus 1/r 1/f 2/r will take outside, तो तब ये होगा 1 minus n minus 1। f का वैल्यू कितना r/2n। This will be the distance, इस distance पे। now what is x equal to? x equal to 2f बोल रहे हैं, तो हमें तो x फाइंड आउट करने हैं। so what is x equal to 2f 2 into r/2n r/n in terms of this n and r हमें आंसर को एक्सप्रेस करना है based on the optics, ray optics, silver lens। अगला क्वेश्चन दे देंगे। समथिंग रफली आई एम हैविंग, ये जो क्वेश्चन मुझे इस तरह का मिला है। A line charge of length a/2 placed along the edge of the cube, find the flux through the cube। नेट फ्लक्स थ्रू द क्यूब कितना है? हम यहाँ एक काम करेंगे, अनदर 8 क्यूब्स यहाँ पे लगा देंगे। फाइन। so there are 4 cubes are there, so we'll assume this is a cube, flux through the cube। so we'll assume there are 4 cubes are there, slight disturbance was there। यहाँ पे चार्ज है, so the flux passing through each cube will be different, will be 1/4। ओके सर, इससे बड़ा डायग्राम मैं यहाँ पे डाल नहीं सकता हूँ, so please try to understand। ये जो चार्ज हम बोल रहे हैं ना, so this it is here, so definitely the flux through each cube will be 1/4। flux through the cube will be total charge कितना हुआ, lambda a/2 by epsilon naught o divided by 4। total flux यहाँ पे कितना है, total flux will be q by epsilon naught। flux through each cube will be how much? तो इसका वैल्यू, फ्लक्स का वैल्यू कितना है, लैम्डा a/2। ओके फाइन, सो ये हुआ लैम्डा a/8 एप्सिलॉन नॉट।
तो ऑप्शंस मेरे पास नहीं है, so I just like took the only the questions, and this will be your answer. So sir, what is the method? यहाँ पे method like यहाँ पे like we have to make this charge जो यहाँ पे charge है ना, this will make it as a center of the four cubes. Then the flux will come radially in all direction. The flux linking each cube will be 1/4 of the total flux. तो यहाँ पे हमें आंसर मिल जाएगा. Really good question. ये तो photoelectric effect. This previous question based on the Gauss law, very very important. यहाँ पे मैं चैप्टर का नाम भी लिख देता हूँ. So this based on the Gauss law electrostatics. अगला वाला ले लेंगे. Light of wavelength is and lithium, then the electron emitted from which element? या तो हम directly we have to go for kmax equal to sc by lambda work function. Problem based on photoelectric effect. अगर आपको ये फॉर्मूला याद रहे तो वेरी वेरी इजी है. Then the electrons is emitted from which wavelength? So यहाँ पे directly work function. If sc by lambda, if this is greater than or equal to work function, photons will be emitted. So हमें यहाँ पे wavelength मिला है, so इसका energy find out करेंगे. What is the energy now? Energy will be sc by lambda. Now you have to substitute the values of h and c here. 12400 lambda will be Armstrong units 5250. इसका energy will be in electron volt. Similarly, E2 का sc by lambda to 1240 approximate, or else you have to substitute the value of h. अगर क्वेश्चन पेपर में h का वैल्यू c का वैल्यू इंडिकेट करे तो you have to substitute, or else you have to do this approximation. So this will be 5250. चेक कर लो, अगर E1 ग्रेटर देन वर्क फंक्शन रहे तो ये जो एनर्जी है ना, ये तो सेम हुआ ना. ओके नो अगर ये जो एनर्जी है, if this is greater than work function, then it will come out. If it is less than work function, it will not come out. Means the energy of the photon, if it is greater than the work function, then photons will be ejected, photoelectrons will be ejected. Less than work function will not be ejected. तो हमें क्या करना है कि you have to find out the value of E, and this value you have to compare. Is greater than this or this. तो मेरे पास like a calculation. I'll roughly calculator. Calculator से मैं calculate कर रहा हूँ. Energy इसका energy हुआ 2.25 electron volt. अब हम चेक कर लेंगे. Then this will give out energy. This from here photoelectrons will come. From here no photoelectrons. Then the electrons emitted from which element? From the CCM. Because the E is greater than work function 1, E is less than work function 2. A over 2, this will be 1. I think just you should be very good in this calculation. ये थोड़ा क्वेश्चन. पहले इक्वली अपोजिट चार्ज मेटल प्लेट्स. यहाँ पे हमें दो चार्ज प्लेट्स हैं. इसका लेंथ ऑफ ईच प्लेट कितना है? 10 सेंटीमीटर. ये चार्ज हुआ प्लस क्यू माइनस क्यू. The electron emerges of the electric field region with a horizontal component of velocity, the magnitude of electric field between the plates is. Then the vertical component of velocity of electron. यहाँ पे vertical component of electric field है. Then the vertical component, the charge velocity of electron है. यहाँ से हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन को. Then the trajectory will be like this. जब यहाँ पे बाहर निकल रहा है, so it will have the components like this. इसको horizontal component कितना दिया? 10⁶ मीटर पर सेकेंड. इसका vertical component पूछ रहे.
हमें ये लेंथ पता है. What is the time it will take to travel this distance? Vx equal to L by T, 10 to the power of 6, 0.1 T. T is equal to 0.1 microsecond. Okay, fine. और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी पता है. देन कितना एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस? Ay equal to q e by m. Charge of electron 1.6 into 10 to the power of minus 19. Mass of electron 10 to the power of minus 31. Electric field value 9.1 per centimeter. यहाँ पे हम 100 सेंटीमीटर, दिस विल बी 100 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर चुके. दिस विल बी 100. दिस विल बी एक्सेलरेशन हम पता है. सो नाउ ay into t, some like it is projected from one plate so that it will emerge from the other plate. Ay, so a सब वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट करना है. 1.6 into 10 to the power of minus 19, 9.1 into 10 to the power of minus 31, 9.1 into 10 to the power of 2, or a time also. क्वेश्चन थोड़ा you have to read. अगर तुमको समझ में आए तो दिस विल बी वेरी इजी. 0.1 into, ओके, सो कैंसल हो जाएगा यहाँ पे. 9.1 तो कैंसल हो जाएगा. 1.6 तो 0.16 यहाँ पे बचेगा आपको. तो बाकी सभी यहाँ पे ले लो तुम. 1.6 बचा. 9.1 ये कैंसल हो जाएगा. 10 to the power of 31, सो यहाँ पे 33 और 25, सो 16 into 33 और 25, 10 to the power of 8. इसका y component of velocity. Based on the capacitor and electrostatics. ये तो simple thermal resistance. Which of the following graph represent various resistivity with the temperature? I think there's a theoretical question. Thermal effective resistance, thermal temperature coefficient of resistance, concept based on temperature coefficient of resistance. As we increase the temperature, the resistivity will increase. Temperature quotient of resistance. Directly, it's the theoretical one. But as you increase the temperature, the resistance will increase. The resistivity also will increase. ये वाला तो find out the equivalent capacitance for the given situation. थोड़ा diagram. This is a plate. ये दो plate है यहाँ पे. And ये वाला एक, this one dielectric slab. इसका K1 है. ये वाला एक dielectric slab K2 and K3. And this one is K3. No. इसका effective capacitance we have to find out. Then ये जो breakup करेंगे, so this will be K1, K2, K1, K2, K3. Separation over D, area of cross section A by 2, area of cross section A by 2, D by 2, D by 2.
ये दोनों कैपेसिटर्स हो गया, ये तो सीरीज है, इसका इफेक्टिव इसमें पैरेलल हो गया. सो वी हैव टू कैलकुलेट द इफेक्टिव कैपेसिटेंस. So the effective capacitance will be, इसका हम नाम दे देंगे C1, C2, C3. तो C3 plus C1, C2 by C1 plus C2. C3 का वैल्यू कितना है? K3 epsilon naught A by 2 by D. C1 का वैल्यू K1 epsilon naught A by 2 D by 2. K2 epsilon naught A by 2 D by 2. बाद में इसका डिनोमिनेटर विल ऐड देम. प्रॉब्लम वेरी सिंपल, बट आपको सिंप्लीफाई करना ही पड़ेगा. इट्स रियली वेरी लेंदी. बिकॉज यू हैव टू मैच द ऑप्शंस. नो, until आप सिंप्लीफाई नहीं करेंगे तो यू कांट, वी डोंट एंड अप आंसर. सो यहाँ पे तो a by 2 d by 2 will get cancelled out. So epsilon naught a by d, the total up will take it the common f naught a by d. Then यहाँ पे हमें बचा है k3 by 2 k1 k2 by k1 plus k2. This will be your answer. क्या हमें करीब करीब मेरे को 23 क्वेश्चंस मिले. तो ऑलमोस्ट 23 क्वेश्चंस जो भी मेरे पास था मैं कलेक्ट करके आई एक्सप्लेन्ड इट. द पेपर वेरी ऑनेस्टली अगर बोलो तो इट्स रियली टफ. So what about other sessions? Other sessions definitely you have to be alert. Not they are formula based only, but you have to do simplification. It's like maths, no. So you should know the concept, you know formula, and you have to simplify to get the answer. It's not like something very only just mere some formula. The paper is considered as difficult, not something like a moderately difficult. No, it's really difficult. Difficult is not conceptually difficult. It's like a lengthy also, you can say it. So my conclusion is paper is, what is the conclusion for physics paper? यहाँ पे conclude कर देता हूँ. Because like see my conclusion, like आप भी देख लो ना, like कितना सारा calculations. What about the paper? Paper is difficult, conceptual, formula based, with lengthy calculations. Not like something conceptually difficult. Because of you should know the formula and आपको calculations भी करना पड़ता है. Okay, fine. So anything if you score something 80, the score between 80 to 85, it will get you 100% marks. This will be percentile. So for 100 percentile, I'll clearly write it. For 100 percentile, 80 to 85 marks. Okay, fine. We'll discuss the evening shift paper. Just I got it and sort it out. I'll update it. Okay, kids. All the best for all those who are writing tomorrow exam. All the best. So once again, revise formulas all. So डरने का बात कुछ भी नहीं. Like जो भी अगर आपको concept clarity formula याद रहे तो you can manage this mains exam very clearly. Okay, bye. See you all of you. Take care. Yeah.